So, hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, this is Dr. Garima, and let's start the PYQ session from our thought. Today is the opportunity to build the tomorrow. So, अब आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है और आप क्या कर रहे हो. आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए. So let's do the PYQs. Let me make the custom module. एम्स हो गया, रिसेंट नीट हो गया. ये तो करते हैं आज. ओके, सो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे माइक. आप लोग ओ मुझे पता था ये ऐसे गिरेगा. सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शायद ही नज़र आएगी, तो मैं क्वेश्चन बोलूँगी और कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी. So the question is, which of the following is not seen in a patient with Cauda equina syndrome? Options are absent bulbocavernous reflex, asymmetric saddle-shaped anesthesia, flaccid paralysis below the knee, and the X-aggregated knee jerk. Which of the following is not seen in a patient with the Cauda equina syndrome? Okay, the answer is exaggerated knee jerk. In the Cauda equina syndrome, knee jerk is lost. Causes of the Cauda equina syndrome which include ट्यूमर ऑफ द स्पाइन. क्या क्या कारण हो सकते हैं कोडा इक्विना सिंड्रोम के? ट्यूमर ऑफ द स्पाइन, पोर्ट्स डिजीज, प्रोट्रूजन ऑफ द डिस्क, and a fracture dislocation of the thoracolumbar spine. Initially, there is a saddle-shaped hyperthesia and the later anesthesia. So, okay, the next question. ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो. Which of the following features can be seen in a patient with cervical incompetence? इनमें से कौन सा फीचर जो है देखा जाएगा पेशेंट में जिसमें cervical incompetence है? Painful vaginal bleed at less than 20 weeks, repeated mid-trimester painless cervical dilatation, repeated third trimester painless cervical dilatation, and bleeding per vaginum in the first trimester. I think it should be the bleeding per vaginum in the first trimester. अगर cervix उसकी छोटी है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो ऑफकोर्स उसके अबॉर्शंस होंगे. सो लेट्स सी. ओके, द आंसर इज रिपीटेड मिड ट्राइमेस्टर पेनलेस सर्विकल डायलेटेशन. सर्विकल इनकॉम्पिटेंस और इनसफिशिएंसी में क्या होता है? रिपीटेड मिड ट्राइमेस्टर पेनलेस सर्विकल डायलेटेशन होती है. विच इज द स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट रिगार्डिंग somnambulism? Options are disorder of the sleep arousal, person will full have full conscious, usually terminates in awakening followed by the confusion, and there may be neurological conditions. So the answer will be person will have full consciousness. ये गलत है somnambulism के बारे में. What is somnambulism? होता क्या है? मीन्स स्लीप वॉकिंग. ठीक है, इसमें फुल कॉन्शियस नहीं होता है पेशेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज. इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी जो है कौन सी ब्रांच की आर्टरी है? ऑप्शंस आर एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी. द आंसर इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी. Next question. A 60-year-old patient presents with the limping gait and left hip. What is the likely diagnosis? Okay, I will show you the image. Now this is the image based question. This is the image. Okay. So the options are tuberculosis of the hip, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and avascular necrosis. And the answer is avascular necrosis. Okay. Next, a female patient with a body mass index of 30 kg per meter square presents to you with the lesion on the neck on the, as shown below. Which of the following conditions most likely suffering from? This is also the image based question. ये तो आप लोगों को आता ही होगा, बहुत easy question है this one, बहुत बार आया एग्जाम में. Acanthosis nigricans कौन कौन सी डिजीजेज में देखी जाती है? डायबिटीज में और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में. So the answer will be metabolic syndrome. Next question. What is the rationale for choosing an inhaled anesthetic with the lowest MAC value? Minimum alveolar concentration. ठीक है,
Options are fastest induction and recovery, highest potency, slowest induction and recovery, and the lowest potency. तो इसमें से है व्हाट इज द रैशनल फॉर द चूजिंग एन इनहेल्ड एनेस्थेटिक विद द लोएस्ट एमएसी वैल्यू. क्या हम कौन सी हम चूज करेंगे इनहेल्ड एनेस्थेटिक जिसकी एमएसी वैल्यू कम हो. एंड एमएसी वैल्यू कम होगी लेकिन उसकी पोटेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक, हाईएस्ट पोटेंसी. विच विटामिन, सॉरी, when infused in supraphysiological doses causes macular edema and macular cyst. कौन सा विटामिन हम जब इन्फ्यूज करते हैं सुप्राफिजियोलॉजिकल डोजेज में मैक्युलर एडिमा और मैक्युलर सिस्ट कॉज करता है. ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन बी3. So the answer is vitamin B3. I will explain it. Macular cyst and edema may develop in patients due to infusion of the supraphysiological doses of the vitamin B3, which is niacin toxicity, which also causes pellagra. Okay. Next question. Stability of the alveoli is maintained by. Options are lung compliance, negative intrapleural pressure. I hope आप लोगों को आवाज आ रही होगी. Negative pleural pressure, increased alveolar surface area by surfactant, and residual air in the alveoli. I will repeat the question. Stability of alveoli is maintained by. Answer is increased alveolar surface area by the surfactant. Next question is also the image based question. I will show you the image. A patient with a history of diabetes and hypertension underwent fundus fluorescent angiography to evaluate his decreasing vision. The FFA yields an image as shown below, but which is the characteristic. Okay, so I will show you the image. This is the image. पेशेंट को विजन लॉस हो रहा है, उसको डायबिटीज़ है और उसको हाइपरटेंशन है और उसने FFA कराया है और ये इमेज आई है. तो क्या आंसर हो सकता है? ओके, आई विल शो यू, आई विल गिव यू द ऑप्शंस. मैक्युलर इस्कीमिया, मैक्युलर एडिमा, सब मैक्युलर हेमरेज एंड प्री मैक्युलर हेमरेज. मुझे मैक्युलर इस्कीमिया लग रहा है क्योंकि ब्लैकनेस हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है. ठीक है, एंड द आंसर इज यस, मैक्युलर इस्कीमिया. Which show it, this is image is large foveolar avascular zone, which is seen as the hypofluorescent patch in the macula and which surround the capillary non-perfused area, both of which are macular ischemia. Okay, next question is also the image based question. I will read the question first, then I will show you the image. Visual field examination of a 52-year-old stroke patient reveals the findings shown in the image. During examination, you notice that he is not able to comprehend your instructions and sometimes give irrelevant replies. What is the likely site of the arterial occlusion? This is a very good image और काफ़ी बार आई है एग्जाम में. ये जो सर्कल्स होते हैं, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी ऊपर होता है, स्काई वाला होता है, कभी नीचे वाला होता है. Okay, so options are left MCA stem, right M1 segment of MCA, left M2 segment of MCA inferior division, and right M2 segment of MCA superior division. The answer is right left M2 segment of MCA inferior division. Okay. Okay, I will share the screen. Is that okay now? Okay, next question. 100-day glaucoma is seen which of the following conditions? Options are central retinal vein occlusion, Eales disease, central retinal artery occlusion, steroid-induced glaucoma. Which one is the answer? Central retinal vein occlusion is the 100-day glaucoma, CRVO. Next question. A middle-aged woman presents with fissured tongue and a peripheral neuropathy. Investigation showed reduced glutathione reduced activity. Which vitamin deficiency is the likely cause of this disease? Glutathione reductase activity. Vitamin B2. The patient is most likely suffering from the riboflavin vitamin B2. इसकी एक टेबल है हर एक विटामिन की, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन क्या चीज़ रिड्यूस हो जाती है.
जिसकी वजह से फिर विटामिन डेफिशिएंसी होती है। चार पांच विटामिन की चार पांच ही हैं विटामिन, उसकी एक टेबल दी गई है, वो अभी यहाँ पे है नहीं, अगर आएगी तो मैं वो डिस्कस करूँगी। This patient is most likely suffering from the riboflavin vitamin B12 deficiency. Okay, now this is the cycle. The life cycle of an organism is given below. Identify the vector involved. Free in the soil stage, 8-legged gonatonym, 8-legged adult, transferring transmission, rodent है, इसमें क्या दिया हुआ है, रैट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रैट की वजह से फ्री इन सोइल एंड रैट, रैट से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, 8-लेग लार्वा और 6-लेग लार्वा। Trombiculate, yes, trombiculate mite is the answer. Next question. A 67-year-old patient underwent a CABG procedure. He started shivering within 50 minutes of shifting him to the post-operative ward. CABG प्रोसीजर हुआ है, शिवरिंग स्टार्ट हो गई है विद इन 15 मिनट्स में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करने के बाद। टेम्परेचर है 35.5 डिग्री सेल्सियस, बट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स कैन बी यूज टू ट्रीट दिस पेशेंट? ऑप्शंस मेपेरिडिन, डेक्समेडेटोमिडिन, रेमिफेंटानिल, ओंडेंसिट्रोन एंड ट्रामाडोल। ओके, ओंडेंसिट्रोन तो नहीं देना चाहिए। क्या क्या दे सकते हैं? लेट्स सी, 1, 4, 1, 2 एंड 4 एंड 5। ओके, 4 भी दे सकते हैं हम। अच्छा, ओके। The clinical features are suggestive of post-operative hypothermia and shivering in this patient. Remifentanil is a known case to cause post-operative shivering, which gives in high doses and has no role in the treatment of this patient. Okay. बाकी सारी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेपेरिडिन भी देंगे, डेक्समेडेटोमिडिन देंगे, ओंडेंसिट्रोन देंगे एंड ट्रामाडोल देंगे। Which facial layer should be dissected to separate the rectum from the coccyx while operating on a patient with the rectal adenocarcinoma? कौन सी लेयर जो हम सेपरेट करेंगे रेक्टल एडिनोकार्सिनोमा में की सर्जरी में? विच फेशियल लेयर शुड बी डाइसेक्टेड टू सेपरेट रेक्टम, रेक्टम से अलग करने के लिए? बताओ भाई। Options are Valder's fascia, Danoveller's fascia, Buck's fascia, and Scarpa's fascia. Valder's fascia is the right answer. Valder's fascia separates from the rectum from the coccyx. Okay, and the lower third of the rectum, which is separated from the posterior vagina anteriorly, किससे separate होती है, कौन सी layer से? By Danoveller's layer, and fascia and the coccyx or lower two sector vertebra किससे होता है? By Valder's fascia से. Okay. समझ आ रहा है? कुछ लग रहा है, कुछ रिवाइज हो रहा है, कुछ हेल्प हो रही है? बता दो यार थोड़ा बहुत कमेंट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A cirrhotic patient admitted for ascites complained of abdominal pain on the second day of his hospital stay. ओके, पेशेंट सिरोटिक पेशेंट है, एडमिट हुआ है ascites के लिए, लेकिन उसको abdominal पेन हो रहा है सेकंड डे एडमिशन के सेकंड डे पे, और एग्जामिनेशन ही वाज फेब्राइल. His lab reports are shown below. Which of the following is false about this condition? टोटल क्या WBC दिया हुआ है 12,400, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है नॉर्मल है 4.3, सीरोलॉजी पॉजिटिव है HbS एंटीजन के लिए, और एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इन एसाइटिक फ्लूइड दिया गया है 743 सेल्स पर माइक्रोलीटर. ओके, एंड द ऑप्शंस आर इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म. टाइमिंग खत्म हो रही है. प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट द कंडीशन इज रिकमेंडेड इन अपर GI bleed. थर्ड जनरेशन cephalosporin यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड वीकली एंटीबायोटिक. ओके, टाइमिंग खत्म हो रहा था, कुछ भी कर दिया मैंने बिना सोचे समझे. ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है बिल्कुल भी. The given clinical scenario along with the ANCs, the more than 250 cells which is shown is the 743 cells. Okay, which is suggestive of spontaneous bacterial peritonitis. And daily antibiotic prophylaxis should be recommended in the patient who have an episode of spontaneous bacterial peritonitis to prevent a reoccurrence. Okay. अगर 250 से ज़्यादा सेल्स हैं, 250 से ज़्यादा सेल्स हैं, ANC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिलिक काउंट, तो हम क्या करेंगे, डेली एंटीबायोटिक देंगे वीक में, वीक वीक में, हाँ वीक में डेली दिया जाएगा.
A patient with a known case of chronic plaque psoriasis with more than 50% of skin involvement presents to you. Chronic plaque psoriasis है और more than 50% skin involved हो रखा है, which will you not recommend. हम क्या नहीं देंगे इसमें? उफ, क्या नहीं देंगे? स्टेरॉइड्स नहीं देंगे, कि साइक्लोस्पोरिन नहीं देंगे, स्टेरॉइड्स नहीं देंगे. Oral and systemic steroids are not used in the management of the chronic plaque psoriasis. Topical steroids may be used. Oral नहीं देंगे, topical दे सकते हैं, ointment दे सकते हैं. A 23-year-old medical student diagnosed with dengue developed epistaxis which that resolved spontaneously. He has been afebrile for the last 24 hours and his platelet count is 14,000. His BP is 110/17. There is 28% rise in the hematocrit. What should be the management? डेंगू डेवलप एपिस्टेक्सिस स्पॉन्टेनियसली रिजोल्व हो चुका है, फेब्राइल है लास्ट 24 आवर्स से, प्लेटलेट 14,000 अब बहुत कम है, बीपी 110/70 है, 28% hematocrit है. What should be the management? 4 units of platelets, plenty of oral fluids, give IV fluids, keep under observation, discharge the patient. Okay. The answer will be give 4 units of platelets, plenty of oral fluids and the IV fluids. 1, 2 and 3 तो ऑप्शन में नहीं है. 1 and 2 करके देखें या 1 and 3. 1 and 3 भी नहीं है. 1 and 2. 2, 3 and 4 is the answer. Okay. 1 platelets नहीं देंगे. 2, 3 and 4 plenty of oral fluid देंगे, IV fluid देंगे और ऑब्जर्वेशन में तो रखेंगे ही ऑफ कोर्स. ओके. क्यों किया गया है ऐसा देखते हैं. द गिवन clinical picture of a student which is diagnosed with the dengue with the history of a febrile period, epistaxis, reduced platelet count जो कि 14,000 है and elevated hematocrit strongly which is 28%. He should be kept under observation and give adequate oral and IV fluids. Okay, कोई platelets नहीं देंगे हम, ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा. अच्छा, ओके. प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जो इंडिकेशन है वो है प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000, क्योंकि इसमें 14,000 है इसलिए नहीं किया. प्रोलॉन्ग शॉक विद द कोएगुलोपैथी एंड एबनॉर्मल कोएगुलोग्राम, सिस्टेमिक मैसिव ब्लीडिंग होनी चाहिए तब हम प्लेटलेट आगे ट्रांसफ्यूज करेंगे. Up to what length of the anal verge will you be able to visualize up through a flexible sigmoidoscope? कितने सेंटीमीटर तक? 70 सेंटीमीटर तक कि 60 तक? 60 सेंटीमीटर तक. ठीक है. Flexible sigmoidoscope is 60 centimeter in length that can be used to visualize the rectum and the sigmoid column. ओके, आई होप ये थोड़ा सा सेशन छोटा सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड मैं कुछ और करने की सोच रही हूँ अभी. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव. आई नो मैं कार्टून बन रखी हूँ, अब टाइम नहीं है मेरे पास इतना. बाय.